Assalamu alaikum everyone, this is Abahat and I welcome all of you to my live session. And I was live a moment ago, but suddenly the video just ended. So I don't know what went wrong. And those of you who are watching, so let's resume our session. And as I was saying, it's an open question answer session. So if there's anyone who has any question for me, you can ask your questions. And if you don't have any questions, then what I can do is I can ask my questions, or we can just discuss anything. Okay, Sajid Bajir, okay, you are here, you're still watching, and I hope there is no voice issue in this recording, or is there still voice issue? Okay, so till the time you refocus what I'm asking about, or if you have any questions, you can just keep on pouring in your questions and I'll be addressing those questions. And in the meantime, agar aapke paas koi questions nahi hain to I had a question which is why do you people listen to my sessions, or why do you come into my sessions? So that's a question from my side. So if you want to answer this question, you can either write your comment in the comment box, or either you can come at the top of the screen and I'll take you live on camera. Muhammad Noman, thank you so much for joining and watching this session. And Wahid Haider Shah, yes, I can see you, are still watching, but no one wants to come live on camera and answer me. Well, anyhow, it's okay, no worries. Okay, so in the meantime, I'll just start with a few things which I wanted to discuss. And again, it's a quote which I read and I wanted to discuss that quote. The quote is basically by Arnold H. Glasnow, and he says, success is not the result of spontaneous combustion. You must set yourself on fire. So if any one of you want to explain me what is meant by this quote, or if none of you want to explain, still I'm here, I can explain it to you. And that's what I want to discuss. Like it's not just a metaphor, but we need to understand what does Arnold mean by this quote. So metaphorically, we use the word set on fire metaphorically. It does not mean कि हम वाकई में अपने आप को आग लगा दें. Obviously अगर आग लगा देंगे तो काम किस तरह करेंगे, हमारे गोल्स किस तरह अचीव होंगे, हमारा विजन किस तरह मीट होगा. सो अपने आप को आग लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. सो यहाँ पर जिस आग लगाने की बात हो रही है, वो आग जो है आपने मेटाफोरिकली लगानी है, और वो आग इस तरीके की होगी विच इज़ गोइंग टू कीप your passion alive. So if you want to keep your passion alive, you need to make certain conditions जिससे जो है आपका वो passion live भी रहे, और आप अपना काम भी करते रहें, और आप अपना vision भी achieve करें. So for that thing you need to have determination which is within oneself, and determination is within anyone. Okay, I can see Hamad Ali Khan. Hamad, I'll try to add you live on camera, and let's see if I can add you. So today's session is the open question and answer session. So in the meantime, जब तक आप लोगों को अपने questions याद आते हैं या आप जो है pose करते हैं, so I can bring people on camera and you can ask questions or answer questions. Okay. So in the meantime, अगर जो है कोई online नहीं आता तो still no problem, I can still continue. अच्छा, then जो है अगर हम spontaneous combustion की बात करें तो it refers to something that happens suddenly and without any apparent cause. So this is like it's a metaphor, it's a quote, and you need to see below the surface meaning of this quote. So इसमें जो है कुछ चीजें हैं which I'll try to explain. That is, every person has a personal responsibility, and one person and any person or individuals, they are responsible for that particular responsibility, whatever that responsibility is. So basically it emphasizes that individuals are responsible for their own success. तो अगर जो है कोई बंदा जो है जिंदगी में सक्सेस नहीं पा रहा, तो उसकी गिनी चुनी रीजंस हो सकती हैं. एक चीज
आपका माइंडसेट हो सकता है. इफ योर माइंडसेट इज नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट, इट्स डिफिकल्ट टू गेज अ सर्टेन लेवल ऑफ सक्सेस. क्योंकि अगर आपका माइंडसेट जो है फिक्सेटेड माइंडसेट होगा, फिक्स माइंडसेट होगा, ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा, तो देन देयर इज नॉट गोइंग टू बी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट कब आती है? इम्प्रूवमेंट आती है जब आपका माइंड जो है ग्रोथ को एक्सेप्ट करता है, जब पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करता है. When that mind has ample room for improvements. Why do we say whenever we do any kind of work, we ask people for their comments or their feedback? Why is that? It's not that कि भाई लोगों को जो अपनी तारीफ सुननी अच्छी लगती है. It's just that they want to see कि लोग क्या ऐड कर सकते हैं उनके ऑलरेडी जो वो चीज कर रहे हैं उसमें उनका क्या फीडबैक हो सकता है. क्योंकि जो फीडबैक होता है चाहे वो पॉजिटिव फीडबैक हो या चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो, वन शुड ऑलवेज टेक इट as a benefit, and one should always consider it beneficial for one's growth. So जब मैंने आपसे कहा कि भाई you people can ask any questions regarding whatever sessions I have done so far, या कोई भी ऐसा सेशन जिसमें जो है आपको जो है कोई क्वेरी हो या आपको अगर अच्छा लगा है तो क्यों लगा है. एंड देन आई आस्क यू एज वेल कि someone who's sending me message on messenger, let's chat. ये तो मेरा जो है आज का टॉपिक था, let's chat. It's not that okay, I'm going to go in messenger and chat with people. So that was for you people who are live. अच्छा, so उसमें जो है ना, यानी क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है कि आई वांटेड टू नो what is your review or what suggestions you can give me so I can improve myself or whatever I am doing. उसमें there's a lot of room. और हमेशा जो है it's not that कि आप अगर expert बन जाए तो there is no room for improvement. One always improve and people keep on improving. So you need to have a positive and a growth mindset. जब आपका growth mindset होगा तो you will keep on improve. So that was the question I asked you. What do you like about my sessions, or why do you come into my sessions? So this is the number one thing. Okay, and then there are certain key elements for achieving success. Like जिस तरीके से मैंने आपको बताया, you need to have a growth positive mindset, and it has to have this room for improvement. You keep on improving. You keep on reading different things. You keep on gauging new skills. You keep on interacting with like-minded people. Even you interact with people with a different mindset, but that does not mean maybe you do not learn anything. You learn so much. Now, in my day-to-day routine, I keep on interacting with so many people, and they are coming from all kind of diverse backgrounds. But then it is, up to me to gauge, okay, what is that इनके साथ जो है interact करके, what is that I'm learning, or what is that I can teach them or impart them. And then there are certain areas, there are certain times when you have to keep your distance. And why do you have to keep your distance? You have to keep your distance because you are emitting so much positive energy that you want to save it for the greater lot, for people जिनको आप जो है larger जो है जो audience है उसके साथ जो है interact कर सकते हैं, and you can impart that knowledge to those people. क्योंकि if you keep on interacting with just one particular person, so the possibility is there that you might lose a lot of positive energy. Because then everyone is different. Some might impart a lot of negative energy. तो वो नेगेटिव एनर्जी जब आप जो है इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी जो है काफी हद तक जो है ना सबसाइड हो जाती है, एंड एट टाइम्स यू योरसेल्फ फील वेरी नेगेटिव. सो यू हैव टू मेंटेन योर हेल्दी बाउंड्रीज. तो आपकी भी जो एनर्जी है वो उस तरीके से ड्रेन आउट ना हो जिस तरीके से हो जाती है. नो, फॉर सम पीपल इट माइट जस्ट you people might think it's philosophy. Well, for others who have observed this, or who have people around them, or who are into this mode of imparting good to other people, so you might have observed it. Even आप अपने work environment में भी ये चीजें observe करते होंगे कि आपके work environment में कोई एक ऐसा बंदा या बंदी होती होगी जिसके साथ जो है
है मोस्टली जो है आप लोग बात करना पसंद नहीं करते होंगे, या आप साथ में जो है थोड़ी देर बैठना भी पसंद नहीं करते होंगे. Why? Because they have this certain aura which emits a lot of negative energies, and once you know absorb that negative energy, you yourself become a negative person. तो इनको हम आम जुबान में टॉक्सिक कहते हैं. एंड एज ए ह्यूमन, एज ए इंडिविजुअल, अगर आपको पता चल जाए कि कोई बंदा या बंदी टॉक्सिक है, to try to avoid their company. Do not try to sit in their company for 2 minutes. तो वो जो 2 minutes होंगे ना, वो 2 minutes भी आपको जो है बहुत तैयार हो. Okay. Then you know when we talk about the elements for achieving success, so growth mindset के अलावा another aspect is you have to have passion and enthusiasm. So आपको किसी भी किस्म का इंटरेस्ट है, पैशन है, जब तक आपका उसके लिए पैशन नहीं है ना, या जब तक आप कोई काम जो है उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से आप सांस लेते हैं, तो लेट मी टेल यू, आपको ना तो वो काम करने में कुछ सुकून महसूस होगा, ना ही आपको जो है अच्छा लगेगा, एंड रादर यू जस्ट यू नो ट्राई टू टेक इट ऑफ योर शोल्डर्स एंड यू वोंट वांट टू डू इट. So if you want to achieve success, try to adopt the roles or try to adopt the things about which you are passionate, and जिसके बारे में सोच के आप you are enthusiastic. Like every night when I go to sleep and when I think about okay tomorrow जो है I do my walk, I do my walking, so उससे एक अलग ही तरीके का enthusiasm होता है, and I feel very fresh even though it's night time and I'm going to sleep, but still वो सोच के मुझे एक excitement होती है, वो जो एक passion होता है, और वो जो एक जो है so to say जो आप कहते हैं ना मेटाफर के तौर पे आग लग जाती है, तो वो जब एक आग लग जाती है कि yes tomorrow I'm going to go for a walk, tomorrow I'm going to explore nature, tomorrow I'm going to do vlogging, tomorrow I'm going to talk to all the audiences, all the followers who follow me on Facebook or on different platforms. So I'll have this opportunity to talk to them and share them my knowledge, whatever I'm observing and exploring in nature. So ये वाला जो enthusiasm है, you need this enthusiasm. तो ये enthusiasm आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक you are not passionate about that particular. So this can you know it can differ from person to person and it can differ from niche to niche. हर एक का जो है अपना area होता है. Those who are doctors, if they are very sincere with their profession, they would be having this enthusiasm with their profession. If there are counselors, they would be having this enthusiasm with their, practicing counseling or thinking about their day. But then if you are not passionate about your work and you just take it as a job, तो फिर उसमें आपको मजा नहीं आएगा, उसमें आपको फायर नहीं फील होगी, उसमें आपको वो जेस्ट नहीं फील होगी जो कि आपको चाहिए मूव फॉरवर्ड करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, या अपना पैशन अचीव करने. देन इसमें एक और जो चीज आ जाती है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, दैट इज हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस. तो विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. इट लाइफ जब कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो वाकई में ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये सिर्फ कहानियों की बात है कि भाई बेड था, बेड पे रोजेस ही रोजेस थे. But then again, that's a very wrong description. क्योंकि जो रोजेस की बात करते हैं, रोजेस के तो कोई ऐसा रोज नहीं होता जिसके साथ थॉर्न ना हो. तो अगर बेड पे जो है रोजेस बिछे हुए हैं तो इसका मतलब उसके कांटे भी होंगे. But then that is something to think. And mostly who write these stories, they don't think. Yeah, maybe they might have thought उनके जहन में यही आया हो, who is going to कौन हमारे पास पकड़ेगा. But they didn't know that there are people like me who are reading really closely and observing what is written and from what age bracket is that. So if you are making a bed full of roses, so you have to, write it for people to, understand, okay, that was a bed full of roses without thorns. So hard work always pays off and there is no easy way to success. So वो लोग जो समझते हैं कि there is a shortcut to everything and those who are successful उन्होंने कोई शॉर्टकट मारा होगा. तो जनाब जी, शॉर्टकट दुनिया में किसी चीज का नहीं होता. इवन डेथ का शॉर्टकट नहीं होता. डेथ भी आपको तभी आती है जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है. तो और वो भी जो है पापड़ बेल के आती है. तो just try to understand पापड़ बेल के कैसे आती है. But I don't want to make it something very horror or something like that. Fearful. It's a time period. You have to complete that time period.
Similarly, जो success होती है, it has its life, it has its phases. You have to complete that process till you reach the level of success. Or when you are a successful person, then you have to, let other people know about your struggles, about how you came to the position you are at the moment. And even though, agar after still you think you're not successful, still you have to tell people, okay, this is a process, and everyone has their own process, they have their own transformative stages, and everyone needs to face it, and everyone has to go through it eventually, day by day, step by step, process by process. Okay, so hard work and persistence, it always pays off no matter whatever you are doing. आप कोई छोटा सा काम भी कर रहे हैं उसमें भी आपको हार्ड वर्क की जरूरत होगी. Persistence के बगैर, determination के बगैर, you are not able to achieve your goals. Even even if you're just a simple person, even if you're a housewife, still you need persistence. You need persistence in so many things. Like when you're doing kitchen work and you're in the kitchen and you are you're doing multitasking. आप कुकिंग भी कर रहे हैं, आप डिश वॉशिंग भी कर रहे हैं, आप जो है सो और किचन के काम कर रहे हैं, so you're persistent. It's not that you say, okay, I'll do the dishes so someone else can do the cooking, or I'll do the cooking at some other time. You have to do it, side by side. And for that, you need persistence, you need determination, you need patience. So your patience or persistence जो है साथ साथ चलती है. If you're not going to have this, you won't be able to, manage your home at all. So if you want to be a professional, you still need to manage your house, even if you are a housewife and yet you are a professional. So you have to do both things. But then again, you also need support systems. Okay, what I believe is, or I still think, there is no one in this world. So, even in a household, everyone needs to share responsibilities. If you are a woman, if you're a professional, if you're a wife, if you're a mother, if you're a sister, or whatever your role is, still you need support systems. If you have a husband who is supportive, who facilitates you, so आपकी life में easy हो जाती है. But then if you have a husband who is all the time criticizing and it's not, and is not helping with your work, professional में तो चलो you can't do anything, but yeah, he's able to help around with the chores. So it's an added advantage. It's a asset, it's a blessing. So जो husbands अपनी जो है wives को help करते हैं, salute to them. You people are doing really good work in aiding your wives and helping them out in listening their already hectic and stressful. So this is one thing. And another thing is you need to be self-motivated. If you want to achieve success, you have to be self-motivated. Okay, if you keep on looking for people who are going to motivate you, तो वो लोग तो देखें जब तक वो बोलते रहेंगे तब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे. फिर क्या, फिर वो तो चले गए, फिर आपको कौन मोटिवेट करेगा. So for that reason, you have to train yourself. You have to train your mind. You have to do good self-talk. You have to talk to yourself. You have to encourage yourself. I can do it. Like there are so many times जिंदगी में, like you might at times, like हमारे जो है सबसे जो हेल्पफुल होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं. तो when we have parents are all the time encouraging us. They're always telling us, okay, you can do this. We have full faith in you. We believe in you. But then again, पेरेंट्स के बाद जो है it's then obviously there are siblings भी जो है एक हद तक जो है आपको सपोर्ट कर सकते हैं. But you need to have someone, and that's someone is you yourself. You have to motivate yourself. आपको खुद से बात करके, खुद अपने आप को encourage करके जितनी satisfaction आएगी वो शायद किसी और के कहने से ना आए. तो just try this and you'll see the difference it makes. Like आपने कई दफा देखा होगा कि when you are going for some kind of interview, तो अंदर से जो डरे हुए होते हैं ना, अब मुझे घर वालों से तो कहते हैं आप जी हमारे लिए दुआ कीजिएगा. बट देन अगेन घर वाले तो चलो दुआ कर लेते हैं, पर आपको जो है वो तसल्ली किस तरह आती है, या आपको वो तसल्ली आती है कि आप किसी अपने फ्रेंड से जो आपका मुखलिस फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर लेते हैं कि आज मेरा इंटरव्यू है, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा. या ये है, या फिर आपको वो तसल्ली आती है when you talk to yourself, you give yourself that motivation, you encourage yourself. Okay,
piece of cake, you can do it. You have done it before, and this is no different than the other already interviews कर चुके हैं. यानी interview is just like the same. But you have to be confident. You have to believe in your capability. So when you are going to do these things, automatically success is going to come your way. And then इसमें एक और जो चीज आ जाती है, you need to take initiative and action. क्योंकि कोई भी सक्सेस जो है विदाउट एक्शन के, विदाउट इनिशिएटिव के बगैर नहीं आती. हाँ मैं सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वाचिंग दिस सेशन. सो यू हैव टू टेक एन इनिशिएटिव. अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे कि भाई मैंने घर बनाना है, तो घर जो है हवा में तो नहीं बन जाएगा ना. उसके लिए मेहनत करनी पड़नी है. उसके लिए यू हैव टू हैव रिसोर्सेज, you have to make conditions in your favor to have those things. So for that you have to take an initiative. Similarly, अगर आप जो है कोई एग्जाम, कोई स्किल अचीव करना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं, you have to have that skill, you have to learn that skill. And when you learn that skill, you'll be able to apply that skill. And that is when you're taking an initiative. तो इनिशिएटिव और एक्शन इसी तरीके से होते हैं कि if you want to achieve something, you have to take an action for it. Without action लिए जो है चीज नहीं हो जाएगी. You want to sleep, so for that what do? You close the light, you put yourself, आप अपने सर को जो है तकिए पे रखते हैं and keep your mobile aside, and then you close your eyes. And ऑब्वियसली जब अंधेरा होता है तो आपके माइंड को मैसेज जाता है कि भाई रात का टाइम है, सोने का टाइम है. यू क्लोज योर आईज एंड यू जस्ट गो टू स्लीप. तो उसके लिए भी तो आप एक्शन ले रहे हैं ना. तो यू हैव टू टेक दैट एक्शन. विदाउट एक्शन ये चीजें नहीं हो सकती. तो फॉर एवरीथिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड. अच्छा, देन इसमें जो है और एक चीज क्या कर सकते हैं, लाइक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स टू सेट योरसेल्फ ऑन फायर. एंड प्लीज, you people are grown up, you are adults. When I say set on fire, it doesn't mean I want you to set yourself on fire with a match. Okay, it's not that. It's just a metaphor. So I'm just going to tell you what are the steps you need to take to set yourself on fire. Basically, I have told about these strategies and these things again and again in my different sessions. So the number one thing is you need to set clear goals. And जो आपके goals होंगे ना, you know, they have to be smart goals. Smart goals in the sense they have to be measurable, they have to be specific, they have to be, you know, time bound. So जो smart के context में SMART में जो आता है, it has to be that, इसलिए उसका नाम smart. Then you have to develop a plan. क्योंकि without plan, अगर आप planning नहीं करेंगे ना, तो planning के बगैर तो चीजें जो है ना बहुत ज्यादा क्या कहेंगे, खिचड़ी बन जाएगी. और खिचड़ी तो बहुत कम लोगों को पसंद होती है. खिचड़ी तो खाते इसलिए when you want to, you know, set your stomach. So you don't want to make your life a खिचड़ी too. So for that you need to develop a plan, and whatever you want to do, have a proper outline. उस outline को बनाएं, उस study करें कि भाई ये outline जो है कितने महीने की है, is it short term, is it long term, और मुझे कितना time required है, और मुझे इसके लिए क्या चाहिए. So proper plan. So वो proper plan जो आपका होगा, that is going to be your strategy, how you are going to you know, unfold things, or how you are going to deal with different things. So and then you have to regularly, you know, review the plan. अगर जो है महीना गुजर गया तो महीने के बाद जो है रिव्यू करें कि प्लान में जो जो चीजें आपने जो है प्लान आउट की थी, जॉट डाउन की थी, हैव यू बीन एबल टू कवर सम पोर्शन ऑफ इट, or how much have you been able to cover, and then review it. And then you know दोबारा से उसको बनाएं. रिव्यू करने के बाद if you think कि भी कोई स्टेप्स हैं जो कि आप कर चुके हैं, and some steps are unnecessary, you don't need to do those steps or take those steps, so you can easily, you know, cut out those steps and then continue with your plan, whatever plan that is. And then इसमें एक और जो चीज है which I already have talked about it, that is you need to continuously learn and improve. क्योंकि you know, even when you are doing something and still you are an expert in that, it does not mean that you know everything. Still every day, you know, every day new softwares are there, new technologies are there, new discoveries हो रही हैं. You need to keep yourself updated. जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, उसी तरीके से जो ह्यूमन सॉफ्टवेयर है, which is the human mind, we have to update that as well. We need to learn new things, we need to understand new things as well. और वो नई चीजें जब हमें पता चलती हैं, what we do is
you try to tell it to other people as well, to take an opinion of those people. What do they think about those technologies? Is it worth it? Yeah, how can you utilize it in your regular work? या कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह उसको incorporate कर सकते हैं या किसी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं. So these are the things which are very important and to keep on learning and improving. Babar Suhail Malik, thank you so much for joining and watching. And another thing is that you need to surround yourself with positive influences. क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द में टॉक्सिसिटी होगी, नेगेटिव लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो आपको लेग पुलिंग करेंगे, आपको डाउन पुल करेंगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू अचीव योर गोल्स. If you want to do something in life, if you want to be successful, you need to surround yourself with the positive lot. ऐसे लॉर्ड्स जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स हैं, ऐसे लॉर्ड्स जिनसे आपको बात करके जो है यू कैन फील द फायर इनसाइड यू, the fire of positivity, the fire of the determination of doing that particular thing, whatever you want to do in life. So you need to surround yourself with that positive influence. And then, as I said, negative influence, they will always deter you from the progress, whatever progress you're doing. अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, लाइक मैंने तो जो है ना ये बहुत दफा ऑब्जर्व किया है कि when I set my mind to okay, I'm going to do this thing and everything is going so perfect and I'm concentrating on that thing. तो एकदम से जो है ना कहीं से ना कोई ऐसा जो है ना नेगेटिव इन अ वे, आई वुड से इवल नेगेटिव एक चीज आ जाती है कि आपका जो वो टाइम होता है जो कि आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं जो है वेस्ट हो जाता है. तो वो जो वेस्टेज है, दैट इज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस. यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिव इन्फ्लुएंस. यू नीड टू एड्रेस, यू नीड टू कीप योर आईज ओपन. अल्लाह ने इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं आप लोगों को, उनका इस्तेमाल करें, अपनी आंखें खोलें. और ये वो आंखें नहीं आपके फेस पे रखी हुई हैं, इट्स योर इनर आईज. तो वो जो आपके दिमाग के अंदर आंखें हैं, जिसको जो है एट टाइम्स वी कॉल आवर सिक्स सेंस, या जो हम गट फीलिंग की बात करते हैं, those are those eyes. So always keep them open whenever you find those kind of negativity or those senses, to make a good use of them and don't waste your time ऐसी जो है नेगेटिव एनर्जीज के पीछे. एंड देन उसमें बहुत सारा टाइम आप लोगों का खाली है स्क्रोलिंग करते हुए भी वेस्ट होता है. So try to limit yourself of the digital landscape. Knowing about different events, different trends, it's not bad, but then you have to see कि भाई आपका जो productive time है, where is it going? Are you able to achieve what you want in a day, or you are failing to achieve those things? So try to be very fixated, very punctual about your time, and try to make it as productive as you can. थोड़ा सा जो है वेस्ट किया जा सकता है. You can for that when you get up, you can water, you do different things. So तब आप थोड़ी बहुत scrolling करें. But majority of the time, if you have an aim to achieve, then you have to take the time by 4 walks. Okay, and then how you can overcome challenges. Overcoming challenges में सबसे बड़ा ये है you need to build resilience. तो जो भी आप पे जो है आड़े आ रहे हैं, you have to face it with courage, and make a strategy how you can subdue those things जो कि आपको जो है time waste करते हैं. And then you need to you need to be adaptable. Whatever circumstances you are in, it's not necessary you'll always have the perfect circumstances. You might be faced with many adversities during achieving those challenges. So for that you have to be adaptable. अब आप देखें कि those of you who travel to the northern areas और वहाँ पर माउंटेनिंग भी करते हैं और माउंटेन क्लाइंबिंग भी करते हैं, तो is it always the same? Like you expect कि भाई हम जाएंगे, हम जो है K2P बेस पे जाएंगे, फिर माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, तो do you always face the same conditions? No, every time the conditions are different. So in that condition, सबसे पहले तो you have to attune yourself to the climatic changes, क्योंकि हर एक की बॉडी क्लाइमेटिक इफेक्ट को डिफरेंटली डील करती है. हो सकता है कि जिस तरीके से आपकी बॉडी जो है इस्लामाबाद में जो है डील करती है, मे बी इन नॉर्दर्न एरियाज वो डिफरेंटली करे. लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू गो टू बाबूसर टॉप, इट्स वेरी कोल्ड ओवर देयर. तो वो जो कोल्ड वेव होती है, वो जब आपके कानों में जाती है तो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, तो वो आपके सर को इस तरीके से जकड़ता है कि आपको जो है नानी याद आ जाती है. इट्स सो कोल्ड.
So for that, you have to be prepared. You have to adapt yourself. You have to take the relevant care. ये नहीं कि आप उधर गए हैं तो आपको याद आया है कि ओहो मेरे तो जूते ऐसे नहीं है कि इन जूतों के साथ मैं पानी में जा सकता हूँ या ये है कि आई हैव जस्ट वन शूज और ये तो पानी से गीले हो गए हैं व्हाट एम आई गोइंग टू डू so you have to be aware you have to take the relevant care always take things in spare if you can and take a bag obviously take medicines as well क्योंकि नॉर्दर्न एरिया साइड पे जो है मेडिसिन बहुत कम मिलती हैं सो ऑलवेज टेक द बेसिक मेडिसिन जो आपको रिक्वायर हो सकती है एंड देन इफ यू हैव एलर्जीज देन डोंट फॉरगेट टू टेक योर एलर्जी मेडिसिन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर आपने जो है कभी भी ट्रैवल करना है अगर नियर बाय में भी करना है तो प्लीज इस्तेमाल अपनी मेडिकेशन और जो भी रिक्वायरमेंट है वो साथ लेकर चलें एंड टू स्टडी दी अदर साइड थिंग्स जहाँ पर आप जा रहे हैं कि उधर कौन सी चीजों की जरूरत होती है कौन सी चीजों की जरूरत नहीं होती एंड हाउ यू कैन हैव अ वेरी मेमोरेबल जर्नी wherever you plan to. So you need to be adaptable according to the circumstances or adaptability. If you are going for some kind of visit, then adaptability is necessary because when you're out of your home, you cannot have that home environment when you're outside. So you need to adapt according to the circumstances. तो अगर आपके मतलब का खाना नहीं है तो चुप करके खुदा का शुक्र अदा करके खा लें या आपके मतलब पे जो है जगह नहीं है यू डोंट फील कंफर्टेबल और आपको अपना बिस्तर याद आ रहा है तो थोड़े दिनों के लिए अपने बिस्तर को भूल जाएं एंड जस्ट बी हैप्पी कि यू हैव बीन ब्लेस्ड विद दैट खूबसूरत मंजर ऑफ नेचर एंड यू कैन see that nature every day. So other than that, आप जो है शायद movies में देखते हैं या you see on in VRs या in different photographs. So if you can see it right in front of you, be grateful for that. So whatever you are having, be grateful for the blessings you are having and thankful that Allah has given you a life which is a healthy life and He has given you that opportunity that you can go and appreciate His blessings and His creations. So this is what I want to share with you today. Actually तो मैं आपके साथ कुछ और शेयर करने आई थी पर आप लोग तो जो है ना मुंह में उंगलियां डाल के बैठे हुए थे किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं था एंड देन एट द एंड फिर मुझे ही बोलना पड़ा so no issues but still you have to actively participate in whatever journey you are facing जो भी आपकी लाइफ की जर्नी है and that's going to help you in achieving your goals in life and now okay so now if anyone has any questions you can ask me your questions right do you have any questions for me अच्छा अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस नहीं है तो चले मुझे बता दें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा तो यू कैन show it via your emojis क्योंकि emojis ही हैं जो कि मुझे यहाँ नजर आते हैं और obviously आपके कमेंट्स भी मुझे नजर आते हैं and I can read those comments okay Hamad Ali it's okay no issue okay you can't join it's okay it's no problem okay so those of you who have watched this whole session what do you think about this session अगर आपको आज का सेशन समझ आ गया हो और आपको अच्छा लगा हो तो you can show it via your emojis और अगर आपको अच्छा नहीं लगा और आपको रोने वाले इमोजीज भेजने हैं तो आप वो भी भेज दीजिए आज किसी ने कुछ भी नहीं भेजना आप लोग सो गए हैं if there's anyone who's awake can you tell me you are awake and you're not sleeping okay आज मुझे लग रहा है बाकी आप लोग सो गए भाई मैंने आज आप लोगों को लोरी तो नहीं सुनाई कोई भी तो सोने का तो इसमें कोई मतलब नहीं है anyways okay anyways it was lovely to chit chat with you and tomorrow is tomorrow Thursday tomorrow is Thursday or what okay can anyone tell me if tomorrow is Thursday or what or tomorrow is Wednesday Tuesday Wednesday Thursday tomorrow is Thursday so tomorrow I won't have a session and I'll have a session on Friday and from next week I'll be having the session 3 days a week so that would
be my new strategy for the coming week. But अभी जो है कल मैं session नहीं करूँगी. I'll do it on Friday. So inshallah, I'll see you on Friday. Till then, bye bye and take care. Allah Hafiz.